Hi everyone, welcome to the channel and my name is Sonia Luthra. As you already know me, I'm one of the top educators on an academy platform for IELTS preparation. Before I start the session, I would like to tell you about something about myself. As you already know my name, I have been teaching IELTS and PTE since pretty long now, and I myself have taken IELTS exam many other times, and every single time I have scored perfect 9 band in reading module and overall 8.5 score. Okay, so that's what about my profile, and this is another session in the same series, that is one of the ongoing series wherein I'm teaching you how to write complex sentences for your writing, as well as to speak the complex sentences, right? So in the previous sessions, in part 1, part 2, part 3 and part 4, this is going to be the part 5th of the same series. Just let me quickly go ahead and tell you the recap that what we have done in the previous sessions. In the part 1, we have done the relative clauses. If you remember, if you haven't watched those previous 4 parts, please go ahead and watch that, because those 4 parts are going to be very useful for you in the writing as well as for your speaking module. So in the part 1, we have done the relative clauses, which means that we have learned how to use which, that and who. I also told you the difference between these three in a very detailed manner. In part 2, I did talk about the conjunctions, specifically the coordinate conjunctions, which is your fanboys. In part 3, we did talk about the subordinate conjunctions and its usage. We did talk about the subordinate conjunction, which means a white bus. If you have missed all these parts, please go ahead and watch that. Under the subordinate conjunctions, I've told you 2 variants. One is with comma and another one is without comma, right? To give the fully flexible usage of subordinate conjunction. In the last class, which was the part 4, I did talk about the gerunds and its usage as a connector, right? So these all are the 4 parts that I have talked about in my previous sessions. If you haven't watched it, please go ahead and watch them, because as I told you, it's going to be very useful for you in your writing as well as in your speaking module. After this session, if you have any doubt or if you want to talk to me, this is where you people can get in touch with me. This is the name of my Telegram channel or Telegram group. You can also find me with the same name on all the other platforms as well, right? If you are somebody who's very new to the Unacademy's YouTube channel, I would also like to talk about what Unacademy is and how it is going to help you with your preparation for not only IELTS but any other competitive exam that you are preparing for, or any of your friends or siblings is preparing for. Okay, so let me quickly tell you about the Unacademy. This is what my Telegram channel or the group look like. Let's now talk about what Unacademy is. So Unacademy is one of the India's largest online platform which helps you prepare for n different types of competitive exams, be it IELTS or UPSC or any other exam like IIT-JEE or NEET. Okay, so an Unacademy provides you different kind of courses, especially one is the paid type of courses, another is unpaid, right? If you are new to the Unacademy and if you don't know about it, I would suggest you to go for the unpaid classes first and then go for the paid classes. Okay, so to join these 2 classes, there are some initial steps that you should do before you can watch the classes.
So some initial steps are to get yourself registered on the Unacademy platform. And to register yourself, there are two ways. You can either download the Unacademy's Learners app from your Android or Apple Play Store, or you can directly log into the website. It will ask you for some of your basic informations like your name, location, your mobile number, and your email address. Once you put in, you will get an OTP, and after verifying the mobile number using the OTP, you will be registered on the platform. Next time onwards, whenever you log in, you will either have to use your mobile number or your email address, and it will send you an OTP. That's a cakewalk, right? So putting in all the information was the only one-time procedure. Later on, whenever you are going to log in, you will only have to use your mobile number and the OTP. Cakewalk, right? So once you have registered yourself on the Unacademy's Learner app, now you have access to all the unpaid as well as the paid courses. Paid courses, of course, by the name, it is very clear that you will have to buy a subscription. But when it comes to the unpaid courses, you will have to firstly select your goal. Goal means whichever competitive exam you are preparing for. Let's suppose you are preparing for IELTS. Select your goal as IELTS. Under IELTS page, you will see all the top 10 educators. And if you are specifically looking for me, look for my name, Sonia Luthra. Click on my name and you will reach to my profile. Under my profile, there will be a category of classes which is called as special classes. These are the classes which are absolutely free of cost. Okay. So how to get access to these special classes? Once you will click on any one of the special classes, it will ask you for a referral code to unlock the class. Okay. So the referral code is written on the bottom of every single slide of this particular PPT. This is Sonia10. Once you will use this particular code, you will be able to unlock the special classes, the free classes, and you can watch as many as special classes, the previous ones as well as the upcoming ones live, right? Similarly, when it comes to the paid courses are more structurized and a proper course for 1 month, 2 month, 3 months, 6 months. Accordingly, you can go ahead and buy the subscription plans, and by using the same referral code, you can get a 10% discount on the subscription fees, right? I'm gonna tell you about the subscription fee in 1 or 2 minutes. Before I do that, I would like to tell you that why you should go ahead and buy the subscription plan for Unacademy platform. Right, the first thing is that the first benefit of buying an Academy subscription plan is that you will get India's top educators under one roof when it comes to Unacademy. You really don't have to go here and there and look for any other educators, because all the India's top educators are here present on Unacademy's platform under the one roof, right? Second benefit is the fees. The fees of Unacademy's courses are pretty reasonable. If you talk about its 1 month's course, it is only 2,700. 2 month it is only 5,000, and for 3 months it is only 6,750. Generally, when you are somebody who is a fresher, I would recommend you to go for either 2 month or a 3 months course. But if you are somebody who's only and only looking for a crash course or just a recap of what you have already learned, 1 month is something that you should go for. As I told you that once you apply my code here, like apply my referral code Sonia10 here, you will, and click on this, you will get a 10% discount on the given prices. For 1 month it will be 2,430 rupees, and for 2 months it's gonna be 4,500 only, which is definitely pretty reasonable for in comparison to any other online platform or any local institute that you are going to apply for, right? So second benefit was the monetary benefit, that you will have to pay a very nominal amount to get a 2 months subscription, which is 4,500. Once you have bought the subscription, there are other benefits that you will be able to avail.
every single month there are more than 20 courses which will be launched, so you can go ahead and join all these 20 courses if you want. So basically there are n number of classes which are going on the entire day, and plus you will get the recorded sessions also. So the timings are going to be pretty flexible for you. You can go ahead and attend the classes at whatever time you people are convenient. Secondly, we do teach general as well as academic, so you don't really have to be bothered about that whether the general training will be given or not, or whether academic training will be given or not. There will be more than 10 plus mock tests every month. There will be live speaking sessions, writing test assessments, and there are also dedicated doubt sessions. So in a course, every fourth class is a doubt class, so that whatever you have learned in the previous 3 classes, you will be able to ask your doubts in the fourth class. Okay, so these are all the benefits that you would get once you buy the subscription. So I think this is a win-win situation for you, because the price is very nominal and you get a lot of things under this particular subscription plan. I would also like to tell you that one of the batch courses, which is named as Expert Batch for IELTS, is starting from 1st of July. You can see all the top educators are going to help you with your preparation if you are somebody who's only looking for a 1 month preparation, right? I personally will be taking care of reading module. As I told you, every single time I have taken my exam, I have got 9, perfect 9, which means 40 out of 40 in my reading module, right? So I will be sharing all the tips and strategies that I myself have applied while I took my exam, and so that you can also get a perfect 9 band score. Recently, yesterday only, one of my students got his result, and he also got perfect 9 score in the reading. So what are you waiting for, guys? If you are somebody who likes, if you are an academic student and you are stuck at 5.5 in reading and you have taken your exams more than 3 to 4 times, this particular course is for you. If you are a GT student and you are stuck at 6.5, you are unable to get 7 bands in reading, this particular course is for you, because I am gonna ensure that you get more than your required bands in reading, because as you know that I'm an expert for reading module. Okay, so this is the particular course that you can definitely should be looking forward to and should join. Right, so that was all about the Unacademy's platform. If you still have any doubt regarding the Unacademy's platform or about any of the courses, or if you would like to get in touch with me, this is where I told you can get in touch with me. This is my Telegram channel and my Telegram group. You people can definitely ping me up there and we can have a conversation regarding your preparation. So now let's quickly get started with the content that this is, as I told you, this is actually the 5th part of the ongoing series, wherein I am teaching you how to write complex and compound sentences, variety of complex sentences to be precise, for your writing module, as well as how to speak complex sentences for your speaking module, right? So in the previous session I did told you that in previous 4 sessions we did talk about gerunds, we did talk about subordinate conjunctions, we did talk about coordinate conjunctions, we did talk about relative clauses, and we did talk about that was all in the 4 previous sessions. In today's session I am gonna talk about the conditional sentences. Okay, so conditional sentences, we are going to talk about the conditional sentences today in this particular class. So I am gonna talk about all the 4 different type of the conditional sentences. Apart from that, I will also be helping you with one more way to give a conditional sentence. Okay, if time allows, I would be also talking about a double or a triple comma sentence. I will also be talking about the triple and
I will also be talking about triple or a double comma sentence in this particular session. Okay, so let's quickly get started with the conditional sentences. So conditional sentences, let me quickly tell you, conditional sentences आपके वो sentences होते हैं जहाँ पर आप किसी भी तरीके की कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा. दीज आर द सेंटेंसेस यूजिंग इफ. जनरली इन सेंटेंसेस में हम इफ का यूज करते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं. हमारे पास इफ को यूज करने के लिए ना देखो 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. As I told you, I will be discussing all the 4 different type of conditional sentences. Plus, I'm also gonna help you with one more type of conditional sentences which is written without if. Okay, so I will be talking about it at the end. Before, I would like to talk about zero condition, first and second and the third condition. Okay. So let's quickly begin with the zero condition. Okay, so here I have written the condition and the result and the structure of the sentence. So every single zero, first, second and third condition have a different structure. This is what the fully flexibility is called. You remember in the previous sessions I did tell you about why we are learning the complex sentences. If you don't remember, let me just quickly go ahead and remind you that in the previous sessions I did talk about that there is one of the parameters called as GRA, grammatical range and accuracy, and to fulfill this particular criteria and to get 7+ bands in GRA, we need to give a variety of complex sentences to our examiners, be it writing or be it a speaking module. And I have shown you this band descriptor also, and we did learn about one word differences between the 6, 7, 8 and 9 band. Do you remember in the 9 band I did tell you wide range of structure with full flexibility, right? In the previous session also, when I was teaching you subordinate conjunctions, I did told you about that. A white bus can be used in 2 variants. One is with comma and another is without comma, right? So if you give this both of the varieties to your examiner in same essay, then it would be considered as you know how to use the complex sentences with full flexibility. If you give only one out of these 2, then it will be considered as a wide range of variety. Similarly, in case of the conditional sentences also, if you are able to give all the 4 variety of conditional sentences in one of your essays, your examiner will definitely get to know that you know how to use conditional sentence with the full flexibility. If you give only 1 or 2 out of which, it will be considered under the 8 band variant, which is a wide range of structure. So now I hope you know the difference between the fully flexibility usage of wide range of complex sentences with full flexibility and without full flexibility, right? So it's up to you. Like if you definitely you see the difference between both the band descriptors, right? If you don't use fully flexibility, if you don't use your complex sentences with full flexibility, you will end up getting 8 bands. If you use it with full flexibility, definitely you are going to get 9 bands in your GRA. These 9 bands are not for your overall writing score. I am only and only talking about one parameter. So please do not get confused. ये जो मैं बार बार आपको 7+ बैंड्स बोल रही हूँ ना, ये मैं ओवरऑल राइटिंग का स्कोर नहीं बोल रही हूँ. मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ आपके 4 पैरामीटर्स में से 1 पैरामीटर की बात, विच इज़ योर ग्रामर, रेंज एंड एक्यूरेसी. ठीक है, अगर आपको बाकी 3, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ थी ये थी ही अबाउट GRA, अगर आपको बाकी के 4 जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपका TR हो गया, आपका LR हो गया, आपका कोहेरेंस एंड कोहेशन हो गया, अगर आपको ये भी सीखने हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरा ऑलरेडी एक राइटिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें कल मैंने आपको TR के बारे में बता चुका है. 3 क्लासेस आर स्टिल रिमेनिंग.
जिसमें मैं आपको ये तीनों चारों मॉड्यूल का इन डिटेल बता रही हूँ कि आपको इन अगर चारों में 7+ बैंड्स लेने हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। डू नॉट लाइक बी डिसहार्टेंड अगर आपकी कल वाली क्लास भी मिस हो गई है। आप चाहें तो अभी भी सब्सक्रिप्शन बाय करके जो कल वाली क्लास है उसको रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। आप 4 दिन बाद भी सब्सक्रिप्शन बाय करके इस क्लास को रिकॉर्डेड देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये चारों 4 आवर्स की क्लास है, बट this can make a huge difference in your writing score, especially for the GT students. GT student के बार बार 6.5 आते हैं राइटिंग में। क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोग को ये पता ही नहीं है कि TR, LR, CC और GRA में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, राइट। सो अगर आप भी इफ़ यू आर ऑल्सो समबडी जो बार बार एग्जाम दे के थक चुके हैं एंड आपको 6.5 ही मिल रहा है राइटिंग में, दिस पर्टिकुलर 4 hours ऑफ क्लास आर फॉर यू. These particular 4 hours are for you. This particular session and the course is for you. आप चाहो अगर आपने आज देखा है ये क्लास या फिर आपने बिकॉज ये कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ था 25 जुलाई को, राइट। अगर आप 25 जुलाई के कभी भी बाद में ये कोर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको फिर भी सब्सक्राइब करके इसको रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, ताकि आप लोग को भी पता चले कि अभी तक आपका ये जो 6.5 स्कोर आ रहा है, आप क्यों आ रहा है, अब क्या चीज़ें हैं जो मिस कर रहे हो जिस पे आपको काम करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आपका ज़ीरो कंडीशन पे। सबसे पहले होता है ज़ीरो कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन में आपकी जो कंडीशन होती है, ना, ये कंडीशन भी प्रेजेंट सिंपल में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, और उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट में आता है। इस तरीके की जो कंडीशनल है ना, वो जनरली ऐसे फैक्ट्स के साथ यूज़ होती है जो कि साइंटिफिकली, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उनके साथ यूज़ होती है, या फिर एक ऐसी कंडीशन के साथ यूज़ होती है जैसे जिसका रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जितनी बार भी अनियंस को कट करूँगी उतनी ही बार मेरी आँखों में आंसू आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने वेंसडे को अनियंस कट करे तो वेंसडे को मेरे आँख में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैंने सैटरडे को कट किए तो सैटरडे को आँख में आंसू आएंगे, राइट। ऐसा नहीं होता, करेक्ट। सो ज़ीरो कंडीशन में आपकी इस तरीके की कंडीशन दी जाती है कि आपकी कंडीशन भी प्रेजेंट में है और रिजल्ट भी आपको प्रेजेंट में ही मिल रहा है, आपको पास्ट या फ्यूचर में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स क्विकली लुक एट द सेंटेंसेज हियर। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। अगर हम बारिश में खड़े हैं तो हम गीले होंगे, और एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई एम गोना स्टैंड इन द रेन आई एम गोना बी वेट। ऐसा तो नहीं है ना, वही बात है कि एज आई टोल्ड यू, ज़ीरो कंडीशन हमेशा तब यूज़ होती है जब किसी कंडीशन का हर बार सेम रिजल्ट आता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि जितनी बार भी मैं बारिश में खड़ी होंगी मैं उतनी बार ही भीगूंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जुलाई में खड़ी होंगी बारिश में तो भीगूंगी, लेकिन अगस्त में खड़ी होंगी तो नहीं भीगूंगी, ऐसा नहीं होता, राइट। सो whenever the condition will have the same result, you will going to use zero conditional sentences, ठीक है। और इसका कंडीशन और इसका रिजल्ट दोनों ही प्रेजेंट में बात होती है। I hope you have understood that. Let's go to the second, like first condition sentence. इसमें आपका जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में होता है, लेकिन जो आपकी रिजल्ट है वो फ्यूचर में चला जाता है। या तो वो चीज़ होगी फ्यूचर में या नहीं होगी। अगर बारिश हो रही है तो हमें फ्यूचर में ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी, अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं फ्यूचर में एग्जाम में पास होंगी, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस ये हमेशा यूज होता है अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली है। इट वुड बी लाइक अ प्रिडिक्टिंग अ रिजल्ट इन द फ्यूचर। मतलब हम फ्यूचर का कोई रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पहले से ही बता रहे हैं कि अगर मैं अभी पढ़ूंगी तो मैं फ्यूचर में जाके पास होंगी, अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगी तो मैं फ्यूचर में डेफिनेटली फेल ही होंगी, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर का कोई रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या एक फ्यूचर की होने वाली पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे कंडीशन तो प्रेजेंट में होगी लेकिन उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। सेंटेंसेस देख लीजिए, एग्जाम्पल में ये दे रखा है, इफ़ इट रेन्स
we will cancel the trip. If you study, you will pass the exam. Right? Now let's move to the second condition. Second condition में क्या होता है? Something has happened in the past. मतलब ये जब हो यूज होता है, हम किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अनलाइकली सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ऐसी अनरियल और इम्प्रॉबेबल सिचुएशन की जो कि अब हो नहीं सकता. डेफिनेटली मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकती ना. तो यहाँ पे हम इस तरीके के बारे में बात करेंगे कि अगर मैंने पास्ट में ऐसा किया होता तो फ्यूचर में ऐसा होता. ठीक है, अगर मैंने पास्ट में लॉटरी जीती होती तो मैं फ्यूचर में ट्रैवल करती. ना ही मैंने पास्ट में कोई लॉटरी जीती थी, ना ही मैं फ्यूचर में घूमने जाऊंगी. तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन. सिर्फ एक हवाबाजी चल रही है, हवा में बातें चल रही हैं. जैसे कि हम अपने एसे में लिखते हैं ना, अगर गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए होते तो आज पॉल्यूशन इतना नहीं बढ़ा होता. समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपके सेकंड कंडीशन सेंटेंस में जाएंगे, जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो कि अनरियल सिचुएशन है, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पास्ट चेंज नहीं कर सकती. गवर्नमेंट पास्ट में जाके अब अपनी वो नहीं बना सकती ना पॉलिसीज. गवर्नमेंट ने अगर पास्ट में पॉलिसीज बनाई होती तो आज क्राइम नहीं होता. सीधी सी बात है. तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपने राइटिंग में यूज कर सकते हो. लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका ये जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आपका मतलब ये एक इमेजिनिंग, मतलब हम एक पास्ट ही दूसरा इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी सिचुएशन जो कि हुई नहीं थी. हम एक ऐसा मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि पास्ट में मैंने कुछ किया था और मुझे रिजल्ट भी इसका पास्ट में मिला था. अगेन ये वाली जो चीज़ है हम इसको चेंज नहीं कर सकते. मतलब अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो गई होती. इसमें क्या था? इसमें जो रिजल्ट मिल रहा है, इसमें जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसमें जो आपको रिजल्ट मिल रहा था वो फ्यूचर में मिल रहा था. ठीक है, बट यहाँ पे जो रिजल्ट, यहाँ पे कंडीशन, अगर आप सेकेंड की बात करो, कंडीशन पास्ट की थी जो अब चेंज नहीं हो सकती, बट रिजल्ट फ्यूचर का था. अब थर्ड वाले में कंडीशन भी पास्ट की है और इसका रिजल्ट भी पास्ट में मिला था. अगर मैंने पढ़ा होता तो मैंने शायद एग्जाम पास कर लिया होता. इंस्टेड ऑफ, मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं फ्यूचर में पास होती. नो, आई एम सेइंग कि अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो गई होती, मैं पास हो गई होती. ना ही मैंने पढ़ा था, ना ही मैं पास हुई हूँ. अब दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो सकती. इफ़ आई हैड नॉट बीन सिक आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी. जो पार्टी हो चुकी है, पार्टी लास्ट वीक हो चुकी थी और अब मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं बीमार नहीं होती ना तो मैं शायद तेरी पार्टी में आ गई होती. करेक्ट? सो आई होप आपको ये चारों के चारों जो डिफरेंस हैं वो समझ आ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से. I am not asking you and I am not pressurizing you to learn every single type of conditional sentence, but make sure that while you are taking your speaking exam or while you are writing your essay or letter or report, खैर रिपोर्ट में तो चलो ये चीज़ यूज़ होगी नहीं, बट लेटर राइटिंग और एसे में आप इसको यूज़ कर सकते हो. एटलीस्ट मेक श्योर कि आप अपना कंडीशनल सेंटेंस जो है ना वो एक बार यूज़ करें ही करें. ठीक है जी. सो ये सारी चीज़ें थी आपकी कंडीशनल सेंटेंस की, 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इसके अलावा मैंने आपको बोला था आई विल बी टीचिंग यू वन मोर वे टू गिव कंडीशनल सेंटेंस विदाउट यूजिंग इफ. ये जो आपका लास्ट वाला जो होता है थर्ड कंडीशन, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, हैड यू स्टडीड वेल, हमने इफ की जगह क्या यूज़ किया? हैड. दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते थे? प्रोवाइडेड दैट. ये भी दो अलग अलग वेराइटी हैं. Let's look at the first sentence. Had you studied well, comma, you would have passed the exam. अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो आप शायद एग्जाम पास कर गए होते. You will pass the exam provided that you study well. आप अपना एग्जाम पास करोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस आपको आगे समझिए, दोनों भी आपके कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन एक में मैंने had यूज़ किया है, एक में मैंने provided that यूज़ करा है. तो आई थिंक आज हम लोगों ने इस पूरी क्लास में 6 वेराइटी ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस सीख लिए हैं. ठीक है, तो कोशिश करिए अपने राइटिंग और स्पीकिंग में एटलीस्ट इसमें से 1 से 2 सेंटेंसेस आप अपने एग्जामिनर को दीजिए, तभी 7+ बैंड्स आपको मिलेंगे. ठीक है जी.
So that was all for today's class. At the end, I would just like to tell you that if you have any query related to your study plan or related to Unacademy, this is where you people can get in touch with me. ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आपको IELTS के सारे लेटेस्ट मटेरियल मिल जाएंगे. प्लस if you are somebody who's planning to buy the subscription on Unacademy, this is my code. Please do not forget to use this referral code to unlock the unpaid classes and to buy the subscription classes and get a 10% discount on this. Okay, I'm gonna see you very soon in my new upcoming video, which is again gonna be on complex sentences part 6. Till then, please guys, take care. And one more thing before I leave the session, if you like this particular video, please click on like the video, and also if you are new to the channel, subscribe the channel and press the bell icon so that you do not miss out on any new video coming on this particular channel from me or any other educator. Okay, I'll see you very soon in my upcoming session. Till then, please take care and be at home and be safe. Bye bye, take care.